Advantages of computerized accounting system. First one, the speed. Okay, the speed of the computer is definitely more faster than the speed of the human being. Accounting data is processed faster because computer require far less time. Okay, whatever the manual entry human being is doing or human being is performing require more time compared to the computer. So definitely when you do the computerized entry, definitely the speed is very high. Next, accuracy. Okay, the computer is a smart machine, so there is less chances of computer doing any errors. Okay, while when the human being is doing the accountancy intentionally or intentionally unintentionally, okay, maybe it is possible the human being make error, but in case of the computer it is not possible for the computer to make the error. So there is a 100% accuracy. Okay, next is the reliability. The computer system can perform the repetitive operations. See, human beings get tired of doing the same work. There is one word called fatigue. Fatigue means if you're doing continuously the same work, you get bored of doing the same work. Okay, so there may be chances that whatever the data you are generating may not be reliable. But in the case of the computer, there is 100% reliability because computer cannot be bored. कंप्यूटर जो है वो बोर नहीं होता है. Okay, so computer can do the work with a full reliability. Then there will be up to date information. The accounting record in the computerized accounting should be up to date. That means कि automatically computer generate the and store the data according to the date wise. See, for example, when the accounting data for the cash purchase of the good is entered and stored, the cash account, purchase account, and also the final account are updated immediately because the computer don't have to do manually all the account. For the human being first have to do the journal entries, then ledger accounting, and then trial balance, and then the final account. But it is not with the computer. Computer can generate the data very fast. So computer information, whatever computer information is up-to-date information. Next, then there will be a real-time user interference. Most of the automated accounting system are interlinked through a network of computer. This makes the information available to the various user at the same time on the real-time basis. That means कि at the same time जो है कंप्यूटर जो है सर्वर से लिंक्ड होता है, तो जो इंफॉर्मेशन होती है वो एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों को मिल जाती है. सो इज अ रियल टाइम मीन एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती हैं और एक दूसरे के सर्वर इज अ मेन हब. ओके, जिससे बहुत सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं एंड जो भी कंप्यूटर लिंक्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका आपके आधार के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है. ओके, यू आर यूजिंग पेटीएम और यू आर यूजिंग गूगल पे. ओके, जितने भी यूपीआई सिस्टम्स आप यूज कर रहे हैं, दे आर लिंक्ड विथ योर मोबाइल फोन नंबर. सेम भी यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाती है. ओके, next, automated document production. Most of the computerized accounting system have standard user definition. Okay, of format accounting, the report is generate automatically. This, as I told you, if for human being, it was possible to make the information so easily. That means that whenever buying, selling occur, first we have to do the journal entries, then we have to pass into ledger account, then trial balance. But for computer, it is not like that. Computer can store the information very fast, at the same time generate the information very fast, just in click of the mouse in the computerized accounting environment. Okay, so it is automated document production. Next is a scalability. In computer accounting system, the requirement of additional manpower only for the data entry operation for recording additional voucher. The additional cost of processing additional transaction is almost negligence. That means, okay, suppose whatever information you have stored, okay, you don't require a human being for रिपोर्टिंग एंड ऑल दैट. एक बार आपने कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर दी, ठीक है, देन आप वो इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो उसमें रहेगी. आपको बार बार जो है ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन रहती है. फॉर एग्जांपल सी, इफ यू आर राइटिंग द मैनुअल एंट्री, तो मैनुअल एंट्री बुक की एक लिमिट होती है, 100 पेजेस, 200 पेजेस, 500 पेजेस.
देन बुक कंप्लीट हो जाती है, फिर देन उसको आपको बुक को उठा के रखना पड़ता है. एंड सपोज इफ यू वांट दैट year data, you require human being to search that data. But in case of the computer, you can store the large number of data in the computer. Okay, so human being जो है वो यहाँ पे इतना नहीं लगते हैं जितने के मैनुअल एंट्रीज में लगते हैं. Then there is legibility. The data display on the computer monitor is legible. This is because the character, alphabet, numerical are written using the standard form. This helps avoiding the error caused by the untidy written. Okay, if you write something, अगर आपने देखा, you can see the difference कि आप कोई चीज हाथ से लिख रहे हो और कंप्यूटर पे डिस्प्ले कर रहे हो. ओके, अभी कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले हो रही है. ओके, तो मुझे यहाँ पे कोई ये नहीं बोल सकता कि मैम ये क्या है, बिकॉज व्हेन यू राइट फ्रॉम योर ओन हैंड राइटिंग, every person has a unique style of उनकी अपनी handwriting होती है, and sometimes other person cannot able to understand read कि वो writing क्या लिखी हुई है, but computer में ऐसे नहीं है. You can see the data जो है वो clearly fonts में लिखा होता है, चाहे वो न्यूमरिक हो चाहे वो अल्फाबेटिक हो, जिसको आराम से कोई भी पढ़ सकता है. तो ये आराम से कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती किसी को पढ़ने में. Efficiency. The computer-based accounting system ensure better resources and this bring efficiency in the organization. That means कि work is doing a very efficient काम होता है because speed अच्छी होती है, reliability होती है. ओके, कम मैन पावर लगते हैं, इसलिए कंप्यूटर जो है आपके लिए ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है. क्वालिटी रिपोर्ट. द इनबिल्ट चेक एंड द ऑटोमेटिक डेटा हैंडलिंग helps to create accounting report that is highly objective and reliable. As computer is doing 100% accurate work, reliable work, so whatever report you are generating out of the computerized accounting is a quality report. Next, MIS report. The computerized accounting system help real-time production of management information system. That is MIS stands for management information system, such as cash flow analysis, outstanding data statement, input output reconciliation. That means कि in computer there is various packages. For example, tally package is there. In that you can get all the information about your data, all the information about the cash flow. कंपनी के पास कितना पैसा आया, कंपनी के पास से कितना पैसा गया. ओके, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट का रिकंसिलेशन, कितना डिफरेंस है, सब कुछ आपको जैसा क्लिक ऑफ माउस आपको मिल जाएगा. आपको मैन्युअली कोई भी काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है. Storage and the retrieval. Again, there is no worried about the storage. You can store the data into pen drive. Okay, अगर आपका जो सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम उसमें इतना जगह नहीं है तो यू कैन प्लेस द हार्ड डिस्क. आप हार्ड डिस्क ज्यादा डाल सकते हो मदरबोर्ड में. CD रोम आप यूज कर सकते हो. Nowadays floppy is not there, but you can CD रोम्स होते हैं, DVDs होती है, पेन ड्राइव्स होती है. यू कैन टेक गूगल ड्राइव में आप सारे बैकअप्स ले सकते हो. ओके, एंड जब भी आपको चाहिए तो आप डेटा को आराम से रिट्राइव कर सकते हो. If suppose in 2021 I wanted data of 1999 or 2000, okay, if I'll go 10 or 20 years back, then too मुझे time नहीं लगेगा. In case of the manual entry, I have to search, that require more time. But in the case of the storage, that CD-ROM, you can write in the CD-ROM or DVD. You can write down the year. और just आपको floppy निकालना है, and then आपको आपको वो डीवीडी निकालना है और डीवीडी निकाल के खाली इंसर्ट करना है. या इवन इन द केस ऑफ पेन ड्राइव्स आल्सो, पेन ड्राइव में भी आप डेट वाइट मेंशन करके रख सकते हो. मोटिवेशन एंड द एम्प्लॉय इंटरेस्ट. द कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ व्हिच मेक देम फील मोर वैल्यूड. दिस मोटिवेटर्स, जस्ट एक बार आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ती है. वंस यू आर अवेयर अबाउट द कंप्यूटर, आप एक बार ट्रेनिंग ले लेंगे, उसके बाद आप भी मोटिवेटेड रहते हैं, एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड रहता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. उनको लगता है कि चीजें जो कि लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस. there is a various advantages of computerized accounting, but see, there is limitations also. The first limitation of the computerized accounting system is a cost of training. Okay, computerized accounting system require a training. Okay, that is special package. That means कि see, as I told you कि computer automatically do all the data. Just you have to first आपको एक ही बार data feed करना पड़ता है, then automatically computer generate करता है journal, ledger, everything. But जो first time आप data feed कर रहे हो, वो data आपको अच्छे से feed करना है, और इसके लिए जो है इसकी training लेनी पड़ती है. Without training, that means कोई भी accounting package आप ले रहे हो तो उसकी training लेनी पड़ती है. Okay, जैसे आपको computer भी आपने सीखा है,
ओके, यू हैव लर्न कंप्यूटर, उसके बाद ही आपको कंप्यूटर आया है। सेम वे आपको आपको जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो हाई है। कंटिन्यूसली आपको जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी डे देर इज ए न्यू टेक्नोलॉजी, एवरी डे देर इज ए न्यू ऐप। ओके, आपके मोबाइल में भी आता है ना इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स कि देर इज ए अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, जिसके लिए कॉस्ट जो है वो बहुत हाई होता है। फॉर मैनुअल देर इज नो कॉस्ट, इफ मैनुअल एंट्री है, सिर्फ आपको एक बुक्स ऑफ अकाउंट परचेज करना है, दैट्स इट। But for computerized accounting system, you require up-to-date technology, plus you require a trained and literate staff. Second, staff opposition. Whenever the accounting system is computerized, there is a lot of resistance from the existing accounting staff. They fear they will lose their job or the importance in the organization. Okay, as I told you, कि there is a less of human being required when there is a computerized entry. डेफिनेटली कंप्यूटर, अगर अगर 5 लोग लगते थे या 10 पीपल लगते थे, इफ 10 or 5 people are required, but now there is requirement of 1 people. So definitely whenever there is a computerized accounting system in an organization, there are people who resist का मतलब होता है opposite, oppose करेंगे। why they will oppose? they will fear कि हमारी जॉब चली जाएगी या हमारी इंपॉर्टेंस चली जाएगी। because see, if I have a pen drive with me, I don't have to depend upon anyone. I can put the pen drive, I can insert the pen drive, okay, into my laptop or computer, and I can get the information. I cannot rely on my staff. So the staff many times oppose the computerized accounting system. Then there will be a disruption. During the change from the manual to computerized accounting system, the work suffer. The accounting staff take time to get used to the new system. Suppose an organization from last many years are doing the manual entry. Now suddenly the company decided to go for the computerized accounting system. Okay, so whatever data they have, suppose they are doing the business from 90s, okay, 1991 में या 1992 में या 80s में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, एंड नाउ अभी वो लोग सारी चीज को कंप्यूटराइज में शिफ्ट कर रहे हैं। तो लास्ट 30 years के डेटा या लास्ट 40 years के डेटा दे हैव टू डू विद द कंप्यूटराइज, तो वो ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लगेगा एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होगा इतना डेटा ट्रांसफर होने में। और फिर उसके बाद क्या होगा कि न्यू सिस्टम जो है वो एम्प्लॉय को सीखना पड़ेगा, तो दे हैव टू वर्क एक्स्ट्रा। then there will be a next disadvantage is a system failure. Okay, the system can crash due to hardware failure, software may not work due to the attack by the viruses. This is more likely in the online operation. This will stop the work for the longer time. Okay, sometimes server down हो जाता है, especially यू में अक्रॉस देखे कभी कभी ऐसा होता है कि देयर इज हॉल टिकट, आपको एग्जाम की हॉल टिकट डाउनलोड करना है। एट अ टाइम पूरी मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में लोग जो है हॉल टिकट डाउनलोड कर रहे हैं या रिजल्ट देख रहे हैं, तो वो टाइम पे सिस्टम जो है फेल हो जाता है और कभी कभी सिस्टम करप्ट हो जाता है या कभी कभी वायरसेस उसको अटैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम बहुत टाइम के लिए बंद हो जाता है। इसलिए हम जो हमारा जो काम है वो रुक जाता है। Inability to check the unexpected error. Since the computer cannot judge, they cannot detect unexpected error. This is because the software is programmed to detect and rectify only the known and unexpected error. See, as I told you, the computer is a smart machine, not an intelligent machine. So whatever the unexpected error, okay, जो भी unexpected error है, वो computer cannot judge भी नहीं कर सकता, detect भी नहीं कर सकता. Okay, breaches of security. Computer related crimes are difficult to detect. Has any alteration of the data. There are the cyber crimes. Okay, cyber crime में आपको पता होगा कि लोग जो है पासवर्ड जो है लोगों का तोड़ देते हैं। Okay, तो इसमें सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका भी आप अपना सॉफ्टवेयर यूज करें, फॉर एग्जांपल सी ओटीपी, अर्लियर क्या होता था, ओटीपी नहीं होता था जो भी एप्स से जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट होती थी, तो समझ में नहीं आता था कि कौन ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। तो मैनी टाइम क्या करते थे, जो हैकर्स होते थे वो हैक कर लेते थे। सो नाउ देयर इज ए ओटीपी सिस्टम आल्सो। अगेन देयर आर पीपल हु आर मोर इंटेलिजेंट जो अभी भी हैक कर लेते और जो है पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है। तो जो कंपनी सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, एप्स यूज कर रही है, जो कंपनी के एप्स यूज कर रहे हैं, उनके पास हायर सिक्योरिटी होना चाहिए। ओके, last ill effect on the health. The extensive use of the computer system will lead to the development of the various health problem. Okay, now from last 2 years mostly, okay, more than 1.5 years,
we are doing the online thing, that definitely फर्क पड़ा है. Even you have come across the problem like muscular pain हो रहे हैं, eyes में strain हो रहा है, ears में pain हो रहा है. Okay, so ज़्यादा अगर हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं तो हमारे हेल्थ पे इसका फर्क पड़ रहा है. Accountant is one who is accounting the books of account, recording the books of account. जैसे आप accounts लिखते हो तो आप अकाउंटेंट हैं. ओके, नाउ कंप्यूटर क्या है और अकाउंटेंट क्या है? रिकॉर्ड डेटा. सी अकाउंटेंट के लिए एब्रीविएशन यूज किया है कैपिटल लेटर ए एंड कंप्यूटर के लिए यूज किया है कैपिटल लेटर सी. ओके, लेट्स सी रिकॉर्ड डेटा. ए यूज लेटर सिंबल्स नंबर्स टू रिकॉर्ड डेटा. ए, नो ए का मतलब है अकाउंटेंट एंड सी का मतलब है कंप्यूटर. Okay, instead of writing accountant, they have written the word A, okay, in the first row, and in the second row, instead of writing the word computer, they have written the word C. Okay, so C uses, that is computer uses machines codes to record, process and store data. Net data input, किस तरह से data input किया जाता है? Accountant manually puts data in the voucher and books. जो accountant होता है वो hand written करता है, हाथ से लिखता है सब कुछ. और कंप्यूटर में डेटा कैसे जाया जाता है? With the help of the keyboard and the monitor. अकाउंटेंट कैलकुलेट टोटल्स बैलेंसेस वॉचर. अकाउंटेंट जो है आइदर वो कैलकुलेटर यूज करता है और वो खुद कैलकुलेशन करता है, बट जो कंप्यूटर है उसके अंदर अर्थमेटिक सेक्शन है जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिकली चीजें कैलकुलेट करता है. ओके, अकाउंटेंट मैनुअली क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक. फॉर एग्जांपल सी, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में किया है तो सबसे पहले आपने अकाउंट की एंट्री पास की, जर्नल एंट्रीज पास की, उसके बाद लेजर पोस्टिंग की, लेजर के जो बैलेंसेस मिले ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रायल बैलेंस यू हैव डन द फाइनल अकाउंट. दैट मीन व्हाटएवर द ट्रांजैक्शन आपने खुद क्लासिफाई किए, बट इन द केस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली चीजों को क्लासिफाई कर देता है. there's the different section, different packages, accounting packages. More popular accounting packages are Tally used by many of the companies. Then there will be a sorting. Accountant manually sort or post entries from the subsidiary book into the ledger account. Okay, as you know, the transaction can be cash transaction as well as this credit transaction. तो cash transaction और credit transaction कैसे अलग होते हैं? In subsidiary book we write all the credit transaction. तो जो अकाउंटेंट होता है वो मैनुअली जो है एंट्री यहाँ से वहाँ पास करता है. बट इन द केस ऑफ कंप्यूटर, लॉजिक सेक्शन इन सीपीयू, उसमें सीपीयू में सेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू वो अकाउंटिंग कोड्स को ट्रांसफर करता है. इंस्ट्रक्शन, ट्रेन अकाउंटेंट डज नॉट टेक इंस्ट्रक्शन फॉर हैंडलिंग द अकाउंटिंग वर्क. ठीक है, इतना ट्रेन अगर नहीं भी रहा अकाउंटेंट तो भी वो अकाउंटिंग वर्क कर सकता है, बट कंप्यूटर नीड्स डिटेल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम. एज आई टोल्ड यू, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, जज, ओके, टेक डिसीजन. तो कंप्यूटर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, तो कंप्यूटर को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी. देन स्टोर डेटा. ए यूज वॉचर्स, फाइल, बुक्स. ओके, अकाउंटेंट क्या करता है कि फाइल यूज करता है, वॉचर्स यूज करता है डेटा यूज करने के लिए, और कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर जितने भी डेटा है वो रैम में, ओके, रैम में सारी चीजें लोड कर देता है. आउटपुट, आउटपुट कैसा आता है? जो भी चीजें लिखता है अकाउंटेंट वो हाथ से हैंड रिटन फॉर्म में ही देता है, बट कंप्यूटर आपको नाइसली प्रिंट आउट फॉर्म में आउटपुट देता है. डेफिनेटली अकाउंटेंट की स्पीड जो है वो स्लो है, कंप्यूटर की स्पीड जो है वो हाई है. एक्यूरेसी, अकाउंटेंट एरर कर सकता है बिकॉज वो ह्यूमन बीइंग है, कंप्यूटर एरर नहीं कर सकता है बिकॉज वो जो है स्मार्ट मशीन है. कंटिन्यूअस वर्क, अकाउंटेंट कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम के लिए काम नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर को दिन रात भी काम कराओगे, ओके, 24 आवर्स ऑल्सो, तो कंप्यूटर काम करेगा. जस्ट उसको उसकी बैटरी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. ओके, the difference between the hardware and software. और हम लोग ने ये भी देखा था कि what are the different types of software. but यहाँ पे क्या है देखो, don't be confused. अभी जो आप देख रहे हो क्या है, different types of accounting software. okay, software is different and accounting software is different. ओके, सो सॉफ्टवेयर हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे थे. कंप्यूटर जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज ही समझता है. एज आई टोल्ड यू, कंप्यूटर इज नॉट ह्यूमन बीइंग, तो वो उसकी लैंग्वेज नहीं समझता है, वो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है. जो सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है. बट अकाउंट्स के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर है?
when does the need to acquire accounting software arise? Okay, company from last many years are doing the manual entry, so why there is a need, for accounting software? So reason देखो क्या है, need accounting software is an integral part of the computer accounting system. The need for the accounting software arrived due to two situations. When the computer is accounting system implemented to replace the manual system. Okay, that means company from last 30 years or last 40 years is doing the manual entry. Okay, by see if you are doing the manual entry, आपको सारे records जो है वो प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। एंड सी पेपर्स जो होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपने भी देखा होगा पेपर जो है वो खराब हो जाते हैं, है ना? देखा ना आपने पेपर, कितने दिन तक आप पेपर उसको स्टोर करके रख सकते हो? सो पेपर जो पेपर्स में आपने चीजें लिखी है वो ज्यादा दिन के बाद जो है उसमें इंक लग जाएगी या वो पेपर खराब हो जाएंगे, वो पेपर फट जाएंगे। तो जितनी भी मैनुअल चीजें हैं उसको आप कंप्यूटराइज, अगर कंप्यूटर में उसको स्टोर करके रखे तो कंप्यूटर में जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेव रहेगा। When the current computerized system need to be replaced with a new one in the view of changing needs. Okay, now एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कंप्यूटर के साथ ही अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, बट जब उसने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था तब उसकी टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट नहीं थी या इतनी हाई टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं थी। ओके, अब वो अपने आप को पूरी तरह से हाईटेक टेक्नोलॉजी में यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल देयर इज सी विंडो 99, ओके विंडो 90s, अभी विंडो 2007 और विंडो 10 भी आ गया मार्केट में। तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, दैट टाइम आल्सो यू रिक्वायर अ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड एट टू टाइम्स। फर्स्ट यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स मैनुअली, अब मैनुअल से आप लोग जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम में ट्रांसफर हो रहे हो, या यू आर ऑलरेडी यूजिंग द कंप्यूटर बट अब पहले आप लोअर वर्जन यूज करते थे, नाउ यू आर यूजिंग द हायर वर्जन अकॉर्डिंग टू द चेंज नीड। बिकॉज सी अर्लियर आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होता था, बट फॉर डूइंग द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको अपडेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए। एट दिस टू सिनेरियो यू रिक्वायर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ओके, सेकेंड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? कौन कौन से डिफरेंट है? फर्स्ट है, इसके अंदर देखो यहाँ पे दिख रहा है रेडी टू यूज, कस्टमराइज, टेलर्ड। ओके, तो ये सारी चीजें जो है रेडी टू यूज, दैट मीन्स कि अकाउंटिंग पैकेजेस जो मार्केट में अवेलेबल है वो रेडी टू यूज होते हैं। दैट मीन्स जस्ट यू हैव टू इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर और ऑलरेडी उसको आप यूज कर सकते हो। कस्टमाइज होते हैं, दैट मीन्स जैसे आपको चाहिए, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीड है वो हिसाब से वो कस्टमाइज हो जाते हैं। एंड लास्ट वन इज टेलर्ड, दैट मीन्स क्या आप उसमें चाहे तो मैनुअल भी एंट्री कर सकते हो, आप चाहे तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। लेट्स सी वन बाय वन। रेडी टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर सुटेबल फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रनिंग कन्वेंशनल बिजनेस बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉल्यूम। दैट मीन्स कि रेडी टू यूज किसके लिए यूजफुल है? जिसका स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, और जिनकी वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी जिसमें जिसमें हर दिन उनकी इतनी ज्यादा नहीं होती है, जिसमें खाली उनका बिजनेस जो स्मॉल लेवल का है और उनको ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है। रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर इज रिलेटिवली इजी टू लर्न एंड पीपल अडेप्टेबिलिटी इज वेरी हाई। ट्रेनिंग भी उसके लिए कम लगती है, ओके, और रेडी टू यूज कोई भी आराम से यूज कर सकते हैं। However, the level of security is relatively low and there is possibility of the data fraud. But in the ready to use accounting में क्या होता है कि जो security है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो frauds हो सकते हैं। Further, this package offer little scope of linking to the other information system. That means कि अगर किसी को online business करना है या किसी को international business करना है, वो टाइम पे ready to use package cannot be useful. Variety of accounting software is available in the market. The most popular software are इंडिया में जो है वो है टैली है और EX है। टैली जो है इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज जो है वो टैली को यूज करती है। ओके, उसके अलावा जो पॉपुलर है देखो सेज, विंग्स 2000, एक्वेरा एक्सेट्रा, ये सारी वो टेक्नोलॉजीज है जो कंपनीज यूज करती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पैकेज? Okay, यहाँ से we'll do in the next lecture. Okay, just we'll see whatever we have done today. Today we have seen advantages of computerized accounting system. What are the advantages of the computer accounting system? And why a computerized accounting system is used by many company. Many company who are traditionally using the manual accounting now are opting for the computerized entry. But when there is a merit, there is a demerits also. There are limitations also.
Okay, so we have seen the various limitation of the computerized accounting system. Then we have seen what is the difference between the accountant and the computer. See, accountant use the abbreviation A, okay, यहाँ पे explanation के लिए, and for computer abbreviation C. Then what are the various software of accounting? Okay, what are the different types of software is different, and what are the different sources of account software is different. So don't be confused. सो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नीड कब पड़ती है कंपनीज को? जब कंपनी अपने आप को अपग्रेड करना चाहती है। पहले वो मैनुअल एंट्री यूज करती थी, उनके जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे जो है मैनुअल थे, बट अब वो अपने आप को फुल्ली कंप्यूटराइज करना चाहती है, या कंपनी जो है अपने आप को अपडेट करना चाहती है। दोनों टाइम पे उनको सॉफ्टवेयर की यूज पड़ती है। ओके, एंड रेडी टू यूज, कस्टमाइज एंड टेलर्ड, ये 3 तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज है। हम लोग ने रेडी टू यूज अभी देखा कि रेडी टू यूज उसके लिए चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, जिनका बिजनेस जो है लोअर लेवल के ऊपर है, दैट मीन्स कि उनका रोज ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होता है, इसके लिए इतनी ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, इजिली जो भी अकाउंटेंट है वो पैकेज को यूज कर सकता है, बट सिक्योरिटी इज वेरी लेस इन द दिस सिस्टम। नेक्स्ट जो बाकी के 2 पैकेजेस है, कस्टमाइज एंड टेलर्ड, we'll see in the next lecture. Okay, student? Yes, ma'am.